सो बात कुछ ऐसी थी कि सामने आ रहा था वीकेंड और हमें जाना था कहीं घूमने। तो सोचा कि आसपास ऐसा कहाँ जाया जाए कि थोड़ा सा मज़ा भी आए, थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंसेस हो। सो यू नो ना मैं कहीं भी 5 स्टार होटल में रुका हूँ, ना दीप्ति कभी किसी 5 स्टार होटल में रुकी है। तो सोचा क्यों ना किसी 5 स्टार होटल में जाके आराम से 1-2 दिन बिताया जाए और चिल किया जाए। तो फिर क्या था, मैंने तुरंत IRCTC खोला, शताब्दी की टिकट्स अवेलेबल थी कोलकाता तक की। तो बस मस्त खाते पीते हम लोग पहुंच गए द सिटी ऑफ जॉय। और जब वहाँ पे पहुंचे तो देखे जो धुआंधार बारिश हो रही थी, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से कि हमें कैब तक नहीं मिली। हम लोगों ने चुपचाप से नेगोशिएट करके पीली टैक्सी में बैठा और बैठकर पहुंच गए हम लोग के 5 स्टार होटल, जो थी नोवोटेल। नहीं नहीं भाई साहब, ये नहीं। इसकी इसके एक रूम के प्राइस में हम लोग पूरे कोलकाता में 2 दिन नोवोटेल में रह के आ जाते। इस पे नहीं, हम लोग गए थे नोवोटेल में। दिस इज ITC रॉयल बंगाल। और वहाँ पे घुसते ही जो वाइब्स थी, ओ भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल की क्लास, नेक्स्ट लेवल की एम्बियंस, एंड इट वाज रियली मज़ा ही आ गया था एकदम घुस के ही। तो द चेक इन एक्सपीरियंस वाज वेरी स्मूथ बिकॉज मैंने पहले ही रिजर्वेशन करा के रखा हुआ था। तो जाकर हमने बस कीज रिसीव किया और वी वेंट टुवर्ड्स आवर रूम एंड द लॉबी वाज वेरी नाइस। आप देख सकते हैं, इट वाज वेरी पॉश एंड एवरीथिंग वाज टू द बॉटम, पॉलिश्ड। एंड ऑल्सो इस टाइम पर कोलकाता डर्बी होने वाला था, तो पूरे के पूरे फुटबॉल टीम आई हुई थी नॉर्थ बंगाल और मोहन बगान के, शायद, इफ आई एम राइट। सो इट वाज ऑल फिल्ड विथ फुटबॉल प्लेयर्स एंड कोचेस ऑल अराउंड। Card is stuck right now. They'll send someone. क्या क्या प्रॉब्लम बताओ? This lobby is really boring. So our key card isn't working, and we are waiting here for another key card to come. And there's no sofa. Yes, and your luggage is here and we're stuck. This is the first impression of a 5 star hotel. Let's have a view. देखते हैं इधर क्या है. Okay, that's the wardrobe. Nice. It's got iron and ironing bed. Nice. Got slippers. चलो स्लीपर्स यूज करेंगे यार. पूरा हम लोगों ने, बारिश इतनी हो रही थी कि पूरे बेड गीले कर दिए हम लोगों ने. ये हमारी अर्धांगिनी वाइफी. कैसा लग रहा है इंटीरियर? It's good. Still exploring. Hand wash, body lotion. Nice. The basin is good. Shower and all. Simplistic design है. बहुत हाई-फाई नहीं रखा है इन्होंने. Let's go. What's here? Okay, this is safe. इसका क्या है? अच्छा, this is this side. Okay. Mini fridge, but I think so. Everything will be chargeable and pretty much highly chargeable. Not for sale. It's not for sale. Okay. Restaurants. इधर क्या है देखें. I'll close this.
is for the washroom to be closed, I guess. Okay, इसको साइड कर देता हूँ. Spa menu. This is the bed. मैडम का शूटिंग चल रहा है. दिन में अच्छा दिखेगा नहीं, रात में ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है. That's all. मैं तो थोड़ा आराम करूँगा. ये जो आराम लग रहा है ना, रात के 2 बज रहे फिर भी. चलो, सी यू टुमारो. देखते हैं कल पूल में जाते हैं. बाय बाय. सो जब सुबह उठे तो हमारा सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था. देख लिए क्या वैनिटी किट. ठीक है, शावर कैप, एक ही है. कॉम्ब, कंघी दिया है बे, शेविंग किट. तो दोबारा दाढ़ी बनाएंगे. And that's dental kit. This is dental kit. Nice. बस यही तो चाहिए था. फ्री के टिश्यू. अरे जा रहा है यूट्यूब पे. नो. पेड ये तो कम दिया है. क्रीमर, कॉफी, 7 स्प्रिंग, दार्जिलिंग टी, शुगर फ्री. ये सब कुछ बचना नहीं चाहिए क्या. लेट्स सी व्हाट्स द स्पा रेट्स. मेघावी वेलनेस स्पा, partial body massages, full body massages, exclusive massages. partial body massage दिया जा सकता है. Let's see. क्या लिखे? Final 550 plus taxes onwards. बेगुन दिया, इलिश मात, इलिश पुलाव, इलिश पटोरी, बापा इलिश तो इलिश, इलिश कोरमा, इलिश. भाई ये तो इलिश का धागा खोल दिया है. ये भाई बापा इलिश, everything इलिश. What if someone doesn't have इलिश? ओए ये मेन्यू कार्ड देखी, ये मेन्यू कार्ड देखी. और अमीरों के चोचले देखो, मतलब एक चुपचाप से छोटा सा पेस्ट मिल सकता था, बट हम लोग आए हैं 5 स्टार में. तो 5 स्टार में हमें मिला टूथ टैबलेट, क्लीनिंग टूथ टैबलेट. तो इसको भाई आपको मुंह में लेना था और इसको चबा लो और फिर ब्रश करना, ब्रश कर लो, या फिर ऐसे ही चबा के छोड़ दो, माउथ रिंस कर लो, हो गया, ब्रश हो गया आपका, बस निकल लो इतनी में ही. और वहाँ से फिर भूख लगी हुई थी ज़ोर से और टाइमिंग था लिमिटेड ब्रेकफास्ट का. तो हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके पहुँच गए नीचे ब्रेकफास्ट बूफे एरिया में. और वहाँ पर तो भाई खानों की लाइन लगी हुई थी. मतलब मालदीव्स में भी हम लोग गए थे, मालदीव्स जितने वैरायटी नहीं थे, बट स्टिल इट वाज अ वेरी नाइस
nicely clean and hygienic area where we can have our breakfast, and I think so that was the area जहाँ हम लोग lunch dinner सब कुछ कर रहे थे, and it had a lot of varieties. I mean, I was surprised to see so many varieties, and they were maintaining it pretty well, and taste was also very good. I mean, I was completely satisfied and impressed with the dining area. सो खा पी कर हम चले गए थोड़ा पूल साइड, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करके हम लोगों ने थोड़ा वॉकिंग वगैरह किया और चिल होकर वापस चले गए हम लोग अपने रूम। हम लोगों ने देख लिया और हम लोग जा रहे हैं अब स्विमिंग करेंगे। मैडम रेडी हो रही है उधर, सो स्विमिंग करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जिम आज शाम में देखेंगे जाएंगे, उसके बाद फिर एक जगह बिरयानी खाने का प्लान है, तो लेट्स गो स्विमिंग एंड हैव फन। So rules were simple. You have to get changed before you get into the pool. चेंजिंग रूम बगल में ही थे, जिम के बगल में ही था, तो हम लोगों ने वहाँ पे चेंज कर लिया। चेंज करके हम लोग पूल के पास आए और पूल में सबसे पहले दीप्ति गई, धीरे 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 कर करके वो she got used to it, and then we both started having fun. So just to mention, the quality of pool was amazing. Cleanliness was perfect, safety was perfect, the depth of the pool was perfect, and the people around it were also very good. Everyone was, no one was behaving very cheaply. So if you wish to visit the pool sometime, you can come here and enjoy the pool side. And also there were lifeguards and trainers, so if you wish to learn, they could guide you, how to start swimming, and they could help you out in a really good way, and they were very helpful as well. ओए क्या बोला? ये तो हमको उसका वीडियो लगा। अरे नहीं, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है गाइस, स्विमिंग में आता है। फिर भी पानी मजा ले रहे हैं गाइस। सो पूल से निकलकर हम लोगों ने हाफ एन आवर का स्पा सेशन ले लिया था। अंदर बहुत डार्क था, इसलिए हम लोगों ने अंदर शूट द शूट वाजंट वेरी गुड। सो आफ्टर द स्पा सेशन वी गॉट रेडी एंड वी वेंट आउट टू हैव बिरयानी। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का स्टार्टर्स हम लोगों ने लिया, साथ में मसाला कोल्ड ड्रिंक लिया था, और फिर आई हमारी औद की बिरयानी। We ordered simple Kolkata biryani because we wanted to have Kolkata biryani after a long time, and the taste was good, but I wouldn't say it was the best.
but because I have had better biryanis in Kolkata as well, Kolkata biryani. So it was good. It was overall, okay, no issues. तो पेड़ वर खा पी कर हम लोग चले गए टुवर्ड्स ईडन गार्डन. पहुंचने में भी अराउंड 1.5 आवर लगने वाला था. सो हम लोगों ने पहले ही टैक्सी बुक करके हम लोग पहुंच गए ईडन गार्डन, और वहां पर हमारा प्लानिंग था लेनिन क्रूजेस जाने का. सो इट वाज नथिंग बट यू गो ऑन अ बोट एंड दे टेक यू टुवर्ड्स the riverside areas, and you have some good food, you enjoy the vibe, that's all. देखो कौन सा पास Gate pass. तो यही वाला है. विंडो सीट ले लेंगे. वो इंटरव्यू पास ले रहा है. Welcome drink. एंड ऑल दो खाने के ऑप्शंस में डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज़ें थी. हम लोग बिरयानी खा के आए थे तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड खा पाए. एंड खाने के बाद हम लोग बाहर चले गए, एंड बाहर जाने के बाद द नज़ारा वाज सो 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 नाइस. मतलब खा पी कर लग रहा था कि बस सब चिल करे. Although there was a lot of people on the boat, but it would have been much better experience if it would have been a quieter boat. So cruise के बाद हम लोग बहुत ही relaxed feel कर रहे थे, and we planned to go back home. और हम लोग बस अपने वापस डेक की तरफ निकल ही रहे थे कि पास से ही एक मस्त अनदर क्रूज पास बाय द बंगाल पैडी करके, एंड इट वाज सो नाइसली डेकोरेटेड कि लगा कि यार लेनिन क्रूज इससे अच्छा बंगाल पैडी में चले जाना चाहिए था. सो एनीवन हु इज प्लानिंग टू गो फॉर दिस द नेक्स्ट टाइम, प्लीज बुक द बंगाल पैडी. Shout out to the Bengal Paddy decoration team, and the cruise was looking so nice, and gaane wana baj raha tha, and people were enjoying, so it would have been a much better experience. So the next time I go, I'm booking Bengal Paddy. And everything happened. We went back home, we took some rest. Next day we had our train back, and this is how we enjoyed our weekends, and this is how we enjoyed our first trip to a 5-star hotel. Thank you so much guys for watching the video. Love you guys. Stay blessed, stay happy, enjoy the festive season, and be connected to F3. Thank you guys. Bye bye.